Hello students, today's topic is rising marginal cost. Conrad's marginal cost rises with the quantity of output produced. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, on the horizontal axis we have taken quantity of output. Okay, so as the quantity of output is increasing, marginal cost is also increasing. This is the marginal cost curve. As you can see, the shape of this marginal cost curve is upward sloping, right? And what does this upward sloping indicates? कि जैसे जैसे आपका quantity of output increase होता है, वैसे वैसे आपका ये marginal cost भी increase हो रहा है. So marginal cost is increasing with the increase in quantity of output produced. Okay. This reflects the property of diminishing marginal product. When Conrad produces a small quantity of coffee, he has few workers and much of his equipment is not used. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब जो Conrad है वो small quantity of coffee जो है वो produce करता है. So basically he has few workers and much of his equipment is not used because he is producing a small quantity of coffee. So he has few workers and much of his equipment is not used. Because he can easily put these idle resources to use, the marginal product of an extra worker is large and the marginal cost of an extra cup is small. तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब वो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉफी प्रोड्यूस कर रहा है, सो बेसिकली उसके पास वहाँ पे फ्यू वर्कर्स उसने एम्प्लॉय किए हैं और ज़्यादा इक्विपमेंट उसके यूज नहीं हुए हैं. अब वो ईजिली एक्स्ट्रा वर्कर वहाँ पे एम्प्लॉय कर सकता है और जो एक्स्ट्रा वर्कर का जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी लार्ज होगा वहाँ पर, बिकॉज वो ईजिली वहां पर इक्विपमेंट्स को यूज कर लेगा. एज मच ऑफ द इक्विपमेंट वाज नॉट यूज्ड, सो जो एक्स्ट्रा वर्कर जो भी आएगा वो इक्विपमेंट्स को ईजिली एक्सेस कर लेगा, उन्हें यूज कर लेगा एंड इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट, उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द प्रोडक्शन विल बी लार्ज. और जब उसका कंट्रीब्यूशन लार्ज है, सो डेफिनेटली द कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी विल बी स्मॉल. So as you can see in this figure, when the quantity of output produced is less, for example at this point, so you can see marginal cost is also less. Okay, quantity produced is less, so the marginal product of extra worker is large. Its contribution, the contribution of an extra worker is large, and that is the reason the marginal cost of extra cup of coffee is small. अब अगर हम इसका एक ऑपोजिट केस देखें, that by contrast when Conrad produces large quantity of coffee, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है कि जब large quantity of coffee produce कर रहा है, so his shop is crowded with workers and most of his equipment is fully utilized. अब जब वो large quantity of coffee produce कर रहा है तो जो उसकी शॉप है it is crowded with workers और उसके जो ज़्यादातर equipments हैं they are already fully utilized. सो इन दिस सिचुएशन, अब अगर उसे एक्स्ट्रा कॉफी या मोर कॉफी प्रोड्यूस करनी है बाय एडिंग वर्कर्स, डेफिनेटली उसे और वर्कर्स की जरूरत होगी, बट दीज न्यू वर्कर्स नाउ हैव टू वर्क इन दोज क्राउडेड कंडीशंस एंड दे मे हैव टू वेट टू यूज द इक्विपमेंट, राइट. जब वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ कॉफी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था तो ज़्यादातर उसके इक्विपमेंट्स ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज थे. अब अगर उसे एक्स्ट्रा कॉफी प्रोड्यूस करनी है तो उसे एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत लगेगी, राइट. बट अब ये जो एक्स्ट्रा वर्कर्स होंगे दे विल हैव टू वर्क इन दोज क्राउडेड कंडीशंस एंड दे हैव टू वेट टू यूज द इक्विपमेंट्स. सो इन दिस सिचुएशन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा वर्कर इज लो. जो भी एक्स्ट्रा वर्कर एम्प्लॉय किया जाएगा उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोडक्शन इट विल बी लो. और जब उसका कंट्रीब्यूशन लो है, सो वी कैन से द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी इज लार्ज. ओके,
जब उसका कंट्रीब्यूशन कम है यहाँ पे टुवर्ड्स द प्रोडक्शन, सो द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एन एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी विल बी लार्ज. As you can see in this figure, when the quantity of output produced is large, for example at these points, you can say marginal cost is also large. तो एक बार अगर हम इसको समराइज करें तो समराइज में क्या हम लिख सकते हैं, दैट व्हेन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड is small, in this situation marginal product of extra worker will be large. उसका जो contribution है वो ज़्यादा रहेगा towards the production, and that is the reason the marginal cost of extra cup of coffee is small. और इसी का opposite case, that when the quantity produced is large, वो already जो है वो the Conrad is producing a large amount of coffee, and that is the reason there are already many workers in his shop, so the most of the equipments are already fully utilized. In this situation, if he wants to produce an extra cup of coffee, definitely more workers will be required, but they will have to wait to use the equipments, and they will have to work in the crowded conditions, so the extra contribution of that worker will be less. जो उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्स्ट्रा वर्कर का वो लेस है. सो इस सिचुएशन में जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहेगा ऑफ एक्स्ट्रा वर्कर विल बी लेस और स्मॉल, यू कैन से. और जब उसका कंट्रीब्यूशन कम है तो हम कह सकते हैं कि भाई अगर आप अब एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी प्रोड्यूस करोगे तो उसकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा रहेगी. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा कप ऑफ कॉफी इज large. Clear? So that's all from my side. Thank you.